Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the class of marketing research. Today we will be discussing the question types, formats and pre-testing. Now that we know how to design a good questionnaire as we talked in last lecture, let's move forward and talk about how to write the questions properly, what formats we can use and how to test our questionnaire before distributing it. First of all, I will be discussing the type of questions. We mainly and broadly have two types of questions. Number one, open-ended questions. These allow the respondents to write in their own words. For example, what do you like the most about KFC? Why do you prefer the online shopping? There are some advantages like these are rich in information. The open-ended questions let the people express their opinions freely, and there are some disadvantages of open-ended questions, which are that they are harder to analyze. Everyone writes something different. We will take the example. For example, if you ask, what do you dislike about Daraz? The one person may say that delivery delays, another may say the product quality, another will say about the price. All will give the different answers. So anyhow, the second category would be close-ended questions, where the respondents choose from the given options only. For example, how satisfied are you with Daraz? The options would be very satisfied, satisfied, neutral, dissatisfied and alike very dissatisfied. So there are some advantages of close-ended question, that they are easy to analyze and to some extent it saves times of the respondents, but disadvantages could be that there are limited options and people can't fully express themselves. Other types you can use as questions can be dichotomous questions. So class, what are the dichotomous questions? These are the questions which allow to answer you in yes or no type. Example, do you use mobile phone banking app? Yes or no. Multiple choice question, choose one of the following options. Which brand of shampoo would you like? So we will use the rating scale or the Likert scale for measurement of the agreement. For example, I trust this branding strongly, strongly agree to strongly disagree. The ranking scale would be used as dichotomous question in a sense that rank the food delivery apps, and I will give several options like Food Panda, Cheetah or Baikia. Now let us come toward the question formats. There are two main formats for writing the questionnaires. Number A, the structured format. All the questions are fixed in the same way for every respondent. These are used mostly in quantitative research. For example, Google form for the customer satisfaction in Metro supermarket. Number B, unstructured format, which is flexible with open questions used in the qualitative interviews mostly. For example, interviewing 10 car owners about their marketing practices. Now let us discuss a bit about pre-testing and finalizing the questionnaire. Before you can collect the actual data, we must pre-test our questionnaire. What is pre-testing? It means trying out your questionnaire on the small group, usually ranging from 5 to 10 people before the full data collection. Why we do pre-testing? Because it helps us to find the confusing question. We will get to know about the timing check, and we will ensure and see if the people understand our language or not. We will ensure that the options cover all the possible answers. For example, suppose you made a questionnaire about the online shopping habits in Multan and pre-tested it with 10 students. You will find out that they didn't understand the term, for example, e-commerce platform. The question about average monthly expenditure was too personal. So you change the e-commerce platform
to online shopping app like Daraz or Amazon and make the income question as optional. So that's how the pre-testing improves the quality. Now we will discuss about the finalizing of the questionnaire. Class after the pre-testing, which is editing of the confusing questions, remove of the redundant ones, and checking the spelling mistakes or any kind of numbers, then arranging the questions properly, add a short intro section, that is the purpose plus confidentiality note. Example introduction would be like this: the survey is the part of university research project and your responses will remain highly confidential and will only be used for academic purposes. So in order to summarize today's lecture, I will say following are the parts that we learned today, which is type of questions: open-ended, close-ending based on ranking and rating scales. Then we discussed about the formats, which is structured and unstructured question. Then we moved toward the pre-testing to ensure the clarity and readability. Remember, a good questionnaire is depicting that the data is good and the research is presentable. Now to sum up the today's lecture, I will say designing a questionnaire may look simple, but it needs planning, testing and clear thinking. Always think from the respondent's point of view, and if they find it easy, honest and short, you will get the best responses. जी क्लास आज हमने जो क्वेश्चनेयर्स की क्लैरिटी के बारे में डिस्कस किया है कि हमें चाहिए कि हम जब अपना क्वेश्चनेयर बनाएं तो हम उसको इस तरह से बनाएं कि वो आसान हो और शॉर्ट हो ज़रा। इसमें हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की है ना, वो हमने ये की है कि हम अगर तो हम क्वेश्चनेयर को बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रिस्पोंडेंट्स के लिए उसको रिस्पॉन्ड करना। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमने प्राइवेसी का ख्याल रखना है, हमने ऑनेस्टली रिव्यूज़ को लेना है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चनेयर्स में आपने क्वेश्चनेयर फिल करवाते हुए या अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए अपने माइंड में रखनी है, वो प्री टेस्टिंग है। प्री टेस्टिंग क्या होती है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखें, अगर आप ये रिसर्च करने जा रहे हैं, KFC की ही एग्जांपल ले लें कि KFC की क्वालिटी कैसी है, इनकी प्राइस कैसी है, या आप कुछ भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, तो अगर तो आप जो है वो बिल्कुल ही 3-4 रिस्पोंडेंट से डाटा लेंगे तो वो जो आपकी रिसर्च है ना वो इनफेक्टिव हो जाएगी। तो प्री टेस्टिंग इसको कहा जाता है कि पहले हम जो है वो कुछ लोगों से उसको फिल करवाते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे क्वेश्चनेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक अगर आप डायरेक्ट ही डाटा ले लेंगे सबसे, तो आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चनेयर ठीक था या नहीं। प्री टेस्टिंग तब की जाती है, प्री टेस्टिंग का यही मकसद होता है कि हम पहले कुछ चंद एक लोगों से 5, 6, 10, 12, 15, 20 लोगों से डाटा लेंगे, जो भी हम पढ़ाना चाह रहे, जो भी हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उससे रेलेवेंट, या जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे रेलेवेंट, पहले हम एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल से क्वेश्चनर्स को फिल करवाएंगे। उससे हमें पता लगेगा कि हमने क्या मिस्टेक की है। हो सकता है कि अगर मैंने ये पूछा है कि आप ई-कॉमर्स से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो हो सकता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ई-कॉमर्स वर्ड से इतना उनको समझ नहीं आई उसकी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में ई-कॉमर्स की जगह ऑनलाइन शॉपिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इनकम वाला पार्ट नहीं फिल करता, छोड़ देता है, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमें पर्सनल क्वेश्चन को ऑप्शनल कर देना चाहिए। या अगर हमारे कुछ रिस्पोंडेंट हैं जो प्री टेस्टिंग के अंदर जो हम स्मॉलर ग्रुप पे टेस्ट कर रहे हैं वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमने बहुत
टफ, कॉम्प्लिकेटेड और हाई लेवल की इंग्लिश यूज़ की हुई है, हो सकता है हमारी ऑडियंस को वो ना समझ आए, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी कंप्लीट टारगेट ऑडियंस, अपने कंप्लीट जो भी हमारा सैम्पल साइज़ है उस तक जाएं, प्री टेस्टिंग इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि हम अपने क्वेश्चनेयर को कैसे सिंपलर कर सकते हैं, कैसे उसको रीडेबल कर सकते हैं और कैसे हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हुए देखनी पड़ेगी। बाकी जो चीज़ें थी लाइक कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में पूछे जाते हैं, क्लोज एंडेड मोस्टली क्वांटिटेटिव में पूछे जाते हैं। क्वालिटेटिव के अपने एडवांटेजेस हैं, क्वांटिटेटिव के अपने एडवांटेजेस हैं। ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की और क्वेश्चनियर्स का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट एजेंडा की तरफ जाएंगे, मार्केटिंग रिसर्च में, और किस किस तरह से हम लोग सैंपल और सैम्पलिंग को इंश्योर करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।